Okay, beta, shall we resume? Yes, sir. Okay, so the recording of the session is now on. So let's continue. We had seen how do we allow for the current and wind. Now let's see how do we counteract the current and the wind. Okay. Now, as I told you, counteracting the current and wind means that we already know what is our destination. What we want to find out is what course should we be steering so that we are able to reach our destination. So the course should be such so that after the current and wind affects you, your final position is as you are planning. So let us see what is the data which is given to us. Now in this question, they give us the initial and final positions. Or they can tell us what is the course made good and the distance made good, which is required to be made good. They will give us the data about deviation and variation. They will give us the current, that is the set and drift, and they will give us the wind, that is the wind direction with the leeway angle. What we are required to find out is we need to find out the compass course to steer and engine speed to maintain for reaching our destination. So let us see how do we solve it. First of all, we plot the course made good vector on the chart. We apply the current to the initial position, join the current vector free end to CMG, course made good vector free end, to find the effective course, counteract leeway, apply variation and deviation to find out the compass course to steer. So let me show you this method in the diagram form. Let's go on the chart and see. Okay, so we are on the chart now. You can see the data which is given to us on the left hand side. It is given in green. This data is given in the question. Initial and final positions, set and drift of the current, data about deviation and variation, wind direction and leeway. All this is given to us in the question, and we are required to find out what is the compass course to steer and the engine speed. So let's plot this data on the chart one by one and see how do we counteract. So first of all, we have the initial position. Let us mark it as X. You can see the initial position on the chart now. We have the final position also. Let's mark the final position. So we have it as Z. You can see the final position on the chart. Now, if you join these two positions, you will get the course made good and the distance made good or speed made good vector. So we represent it with double arrows. So just put double arrows here. So you have the course made good vector with you. The length of this vector is speed made good or distance made good. This is a 1 hour triangle, so both are same. That is the advantage of 1 hour triangle. Now, second thing which you apply, see the current, set and drift is given to us. Now to the initial position, you apply the current. So set is known to us, so that gives us the direction in which the current vector is to be applied. Drift is also given to us, so we can cut that much of distance, and this gives us the length of the current vector. Current is represented by 3 arrows, so let's mark these 3 arrows here. And let's give this vector end a name Y. So this becomes point Y. Now,
we have to join the free end of the current vector, that is the y point, with the free end of the course made good vector, that is the z point. Now, once you join this y and z, let's join it. This gives you your course to steer, okay, or effective course. This should be your effective course to reach at your destination. And if you measure the length of this effective course vector, that is the blue color vector, it will give you the engine speed which you are required to maintain. So if you maintain this much of engine speed, and if you have your effective course as the blue vector, after the current affecting you, you will be reaching at your destination, that is point Z. Okay, now let's counteract. We have already counteracted the current here. Let's counteract the wind also. So let's see from which direction the wind is coming. So in this question also we have southerly wind. So wind is coming like this. It is pushing the ship from the windward side, that is from the starboard side. And to make this as effective course, we will have to apply the leeway opposite to the direction in which the wind is pushing us. So wind is pushing us towards north. This is a southerly wind. It is pushing us towards north. So we have to apply the leeway angle in the direction of the wind. So let's apply the leeway angle. I have applied the leeway angle in the direction of the wind. After applying this leeway, you can draw your true course to steer. So if you are steering this course, wind will push Sir, you. यहाँ पे the point to notice कि जो CTS वाला जो भी बना, like we got the true course of course, तो इसका engine speed पे कोई bearing नहीं है. Okay. Basically, the question which you have in your mind is, will the wind have any effect on the engine speed or not? Okay, so for Chartwrok beta, we do not consider any effect of wind on our speed. We only consider the effect of wind in terms of the leeway angle. Okay, practically this is not true. Practically, if you have wind coming from ahead or from astern, it will also result in a little bit reduction or pickup of speed. But as far as Chartwrok is concerned, we do not consider the effect of wind on our speed. Copy, sir. Okay. Okay. So once we have this true course to steer on the chart, now it is very easy for us to find out what will be our compass course to steer. We have to just convert this true course to compass course. So for that, we will again be using CDMBT. We will pick up the variation and deviation. We will apply it to the true course, and we will have our compass course to steer. So you see, one of the items which was required here was the compass course to steer that we have obtained by converting the true course to compass course. The second thing which we wanted to find out was the engine speed. So if you measure this effective course vector, it will give you the engine speed magnitude. So this is known as counteracting the current and wind, or counteracting the set, drift and leeway. सर ये जो compass CTS है वो leeway track हो जाएगा ना सर? Okay बेटा, you can call it a leeway track also. That's another name which we give to it. Drift counter किया, उसके बाद wind counter करने के बाद जो leeway track आया वही लेंगे ना सर CTS? Exactly बेटा, exactly. Okay बेटा. सर ये जो यहाँ पर करंट लगाया है, दैट इज ऑपोजिट. अगर हम देखें तो फिर शिप तो अगर नीचे जाना चाहिए ना सर, करंट ऊपर से नीचे लग रहा है तो इसमें. ओके बेटा, ओके बेटा, यूजुअली चार्टवर्क में हम लोग जब भी काउंटर एक्ट करते हैं तो करंट को इनिशियल पोजीशन में लगाते हैं. अब इससे एक डाउट आपके माइंड में आ सकता है
कि सर हमने जैसे लीवे लगाया, wind was coming from this particular direction, we applied the leeway in the opposite direction. So अगर करंट हमें साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में लेके जा रहा है, should not we be applying it in the opposite direction? That doubt can come in your mind. अब बेटा मैथमेटिकली तो उसे लगाया जा सकता है, कैसे? आई विल शो यू. अगर आप करंट को भी ऑपोजिट लगाओ तो आपको लगाना पड़ेगा उसे फाइनल पोजीशन पे, लाइक दिस 1 2 3, और फिर इसका जो फ्री एंड है, अगर आप इसे अपनी इनिशियल पोजीशन से ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास यहाँ पर भी इफेक्टिव कोर्स आ जाएगा. ओके, बट चार्टवर्क में यूजुअली हम लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं. सी दिस व्हाट वी हैव मेड हियर इज ए पैरेललोग्राम. Whether you get the effective course from here or from here, both are going to be same. Okay, and fundamentally also you see current plus CTS is giving you CMG in both the cases. एक केस में करंट पहले है, CTS बाद में है, दूसरे केस में CTS पहले है और करंट बाद में है. दोनों का रिजल्टेंट CMG आ रहा है. बट चार्टवर्क में यूजुअली हम लोग करंट को पहले अप्लाई करते हैं. ओके, रीजन उसका क्या है वो भी मैं बता देता हूं. करंट को पहले इसलिए अप्लाई किया जाता है बिकॉज करंट वेक्टर इज नोन टू अस. सी द सेट एंड ड्रिफ्ट ऑफ द करंट वेक्टर इज गिवन टू अस. सो व्हेन यू अप्लाई इट, यू नो बाद में जो भी पैरामीटर आपके पास है वो आपको मिल जाएगा. अगर आप इसे लास्ट में यहाँ पे अप्लाई कर दोगे, मिल तो फिर भी जाएगा. ओके, बट यू सी you are not starting from the initial position. That sometimes creates confusion in the mind. So that's why in Chartwork we always apply the current first and the effective course or the course steered later. सर एनी विच वो पैरेललोग्राम कर रहा है, दोनों लाइन पैरेलल है तो सेम ही रहेगा ना कोर्स. एग्जैक्टली बेटा, दोनों तरीके से जो कोर्स आएगा वो सेम ही आएगा. बस अब मतलब ये है कि शिप इस ट्रैक पे चल रहा है ना, शिप इस ट्रैक पे चल रहा है, उसकी हेडिंग इस तरफ है. बेटा शिप की जो हेडिंग है that is given by the blue color vector. Okay, let me erase the other side which I have made now. जो शिप की हेडिंग है बेटा, शिप की हेडिंग is given as if there is no wind. Let us cancel the wind for now. There is no leeway. Now शिप की हेडिंग जो है that is given by the blue color vector, और शिप का जो एक्चुअल ट्रैक है that is given by the green color vector. मतलब इसका ये हुआ कि हमारा जो शिप है it will be heading like this but moving like this. Okay, हेड तो ये करेगा इस डायरेक्शन में जहां मैंने सिंगल एरो बनाया है, और ये मूव करेगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जहां मैंने डबल एरोज बनाया है. द कोर्स मेड गुड इज द एक्चुअल कोर्स ओवर द ग्राउंड. ओके सर. Okay beta, so this is also clear now. Any more doubts coming beta? Very good. So this concept is done. This is a very important concept in Chartwork because बाकी के जितने भी concept Chartwork में आते हैं more or less इसका कोई ना कोई part उन concept के साथ add on होता ही है. So if you have doubts in this concept, तो आपके बाकी भी जो topics हैं उनमें confusion आना शुरू हो जाता है. So that's why I picked up this topic. So let's move on to our topics one by one now. हमारा जो पहला topic है pending topics में से, that is nominous range, luminous range and geographic range. So let us see this concept of ranges. Let me go straight away to the ranges now. Excuse me, sir. बोलो बेटा. Sir, just one thing I just needed to convey, sir. So ये जैसे अभी आप पढ़ा रहे हैं सर कि like जो चार्टवर्क आपने अभी स्टार्ट किया, you started with the basics. So this was the best part. But with the other subjects, especially like stability ना, तो जैसे मैं अभी फर्स्ट टाइम ARI से जैसे कोर्स कर रहा हूँ. So जैसे स्टेबिलिटी में हम लोग इन बिटवीन द मॉड्यूल्स चल रहे हैं. जैसे A से Z है तो कोई Y से स्टार्ट कर रहा है,
बेस से चालू कुछ भी नहीं हुआ, लाइक यू क्लियर्ड ऑल द बेस, तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। तो हम लोगों को आगे गो थ्रू करने में आसानी हो रही है। तो सेम ये इशू थोड़ा स्टेबिलिटी में जैसे आ रहा है। सो जैसे हम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से जैसे सर, क्योंकि हम लोग अब कोई 2 साल बाद फेज 1 कर रहा है, कोई 3 साल बाद कर रहा है, सो स्टार्टिंग का बेस क्लियर, तो हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसमें ना कंटिन्यू करने के लिए। So like since you started like this, so this was the best thing because you cleared all the basics. So that was the best part. So it's easy for us to go further. So you understand what you joined just now, beta, in January batch? Jan batch में. Okay, beta. Okay, all right. तो जैसे सेकंड करते थे तो बेस से चालू होता था, तो फिर आगे बढ़ते थे तो हमारे लिए इजी होता था। अब स्ट्रगल करना पड़ता है कि मतलब फिर अच्छा जब पिछले बेसिक्स के लिए फिर वही बुक खोलो and then read out everything, something is coming up, something is not coming up, so that issue is coming up right now. Yeah, I got your point, beta, exactly. Basically the way I pick up the topics is because whenever I see I need to do this topic, उसके लिए जो basics चाहिए होते हैं, I usually give some time to them. तो जो अभी टॉपिक आगे आने वाले हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट यूज होना था, इसीलिए मैंने इसे पिकअप किया। हालांकि मैंने कुछ और कॉन्सेप्ट भी थे बेसिक्स, वो छोड़ दिए हैं बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। सो एनीवे आई गेट योर पॉइंट। what I'll do is I'll have a word with other faculty member. सरीद सर ले रहे हैं ना बेटा स्टेबिलिटी आपके साथ? हाँ सर, हाँ सर, मुझे लगा यही प्रैक्टिस चल रही होगी, that's why I didn't say anything, but since now you took it through a different way, that's why I asked you sir. ओके बेटा, ये प्राइमरी सेकेंडरी पोर्ट के बारे में भी सर आप ही करा दो टाइट। बेटा ऐसा है कि मतलब ये कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस या ऐसे कुछ नहीं है, दिस इज बेसिकली माय वे ऑफ कन्वेइंग द थिंग्स। तो मैं दो चीजें आपको बताऊंगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग जो है बेटा कि आई विल हैव ए वर्ड एंड बाकी के फैकल्टी मेंबर्स के साथ भी आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस थिंग so that it is easy for you. And number 2 बेटा एक चीज और है, वो ये हो सकता है अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो because it is the first month, but later on as you go into the second and third month, things are going to settle down, because if the topic is not very much clear in your mind today, certainly it is going to come up and it will be taken up. That's the second part. But nevertheless we will have this in our meeting. So faculty meeting mein beta I will raise up this issue. Okay sir, thank you sir, thank you very much. Okay. मैं नवंबर बैच का हूँ सर, लेकिन जैसा भी बोला गौरव ने वैसे ही सेम मुझे भी ऐसा इशू है। फिर क्या होता है ना, स्लोली आपको लगता है ठीक है बाद में चीजें ठीक हो जाएंगी और वो पाइलअप होता चला जाता है सर, वो मन नहीं लगता है। फिर कभी कभी ऐसा भी लगता है सर, मतलब शायद ऐसा तो नहीं हमने गलती कर दी ऐसे ऑनलाइन क्लासेस लेके, क्योंकि जैसे जाके फिजिकल क्लास देखो ऑनलाइन क्लासेस में सी एज फार एज माय सब्जेक्ट्स आर कंसर्न्ड आई एम प्रेटी मच क्लियर दैट इन ऑनलाइन क्लासेस यू विल बी मच बेटर ऑफ देन ऑफलाइन क्लासेस। प्रैक्टिकल चार्ट वर्क में बेटा मैं इतनी डिटेल में कभी भी क्लास में नहीं करवा पाता। सो यहाँ पे यू हैव ए स्क्रीन टू एवरीवन, वन स्क्रीन टू एवरीवन, सो यू कैन सी इट क्लियरली व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। ओके, so online is quite good. Only thing is you have to modify a little bit in the online environment. सर कुछ नेविगेशन का पार्ट जैसे हम लोगों को कराया गया सर, वो इतना रश में कराया गया है जस्ट टू हिट द लाइन कि हाँ करवा दिया गया इस टाइप से। नॉट श्योर कि किसी मतलब आया हुआ, कुछ लोगों को आया है वो समझ में, कुछ लोगों को पहले से भी आता है सर, लेकिन क्लास में हम अगर हैं तो सबको ही आना चाहिए ना, वो पॉइंट बेटा। बट सर करना तो ही ऐसा तो नहीं कराया या हमसे नहीं हो पाया तो हम करेंगे नहीं, ऑब्वियसली we'll have to do it by our own, then we have to prepare for examinations, then we'll clear also, ऐसा नहीं है। बट होता है ना सर, जैसे बैक टू बैक हम ERI कर रहे हैं, सेकंड मीट भी ERI से किया, फेज 1 भी ERI से किया, तो फिर से थोड़ा पॉइंट। No problem beta, as far as navigation is concerned you will not have any problems at all, and regarding other subjects also I will be talking with faculty members and I have noted your feedback. सर एक प्रॉब्लम थोड़ा और आ रहा है, लाइक कि जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी तो हम क्लासेस में नोट्स बना लेते थे। द गुड थिंग इज ओके, अब क्या है सर, पीडीएफ पे पीडीएफ, मेल्स पे मेल, मेल पे मेल, वो एक बस फोल्डर बना हुआ है, नथिंग एल्स। ओके बेटा, अब थोड़ा सा हमें भी जो है ना ये चेंज करना पड़ेगा,
because we were used to physical notes in our hand. Yes. But अब तो बेटा पूरा environment ही ऐसा हो गया है that we will have to modify accordingly. तो ये थोड़ा सा तो हमें भी करना पड़ेगा बेटा. This is how the entire world is going on. You see schools बिकॉज and सर colleges. हम जैसे अभी सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक क्लासेस ले लेते हैं. Right. सिमिलरली उसके बाद जब अब थोड़ा बहुत तो रेस्ट भी चाहिए सर, 1-2 घंटे बंदा रेस्ट भी कर लेता है. उसके बाद पढ़ने बैठते तो हमें 6 की 6 क्लास वापस एक बार पढ़नी पड़ती है, बिकॉज हमें रोक रोक के नोट्स बनाने पड़ते हैं. Okay. बेटा मेरे सब्जेक्ट में एटलीस्ट विच इज पर से यू कैन से द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑफ फेज 1, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. मैं आपको कुछ एक जो चीजें हैं उनको आई विल टेल यू टू टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दोज थिंग्स एंड कीप इट विद यू. एंड एक बार आपने उन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लिया, देन यू विल नॉट नीड टू रिवाइज इट बेटा. वंस द कॉन्सेप्ट हैज गॉन हियर यू विल नॉट नीड टू रिवाइज इट. आप जैसे सिंबल्स हैं, सिंबल्स यूजुअली पीपल फॉरगेट, सो आई टोल्ड यू प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड. एग्जैक्टली सर, जस्ट लाइक चलो नेविगेशन तो सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, समझ में आ जाता है. अब जैसे हम मित्तल सर हमें पढ़ाते हैं, जैसे IMDG कोड हो गया सर, IMSBC कोड हो गया, इतने कोड्स वगैरह के सबकी जो डिटेल्स होती हैं उनके तो सर PDF से देख के तो वैसे नहीं समझ में आता है. एंड सर भागी भागी स्लाइड चलती हैं तो सीधी सी बात है, हमें रोक रोक के करेंगे तो 1 घंटे की क्लास हमें 2 घंटे लग जाते हैं उसके नोट्स बनाने में. अब उन नोट्स बनाने के बाद पढ़ेंगे कब से? राइट बेटा, राइट. दैट सी दैट यू हैव टू थोड़ा सा बेटा गियर चेंज करना पड़ता है बिटवीन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स एंड द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में अप्रोच थोड़ी सी अलग लगती है. सो मैं आपको उसका भी एक ट्रिक बताऊंगा कि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें कैसे हमने तैयारी करके पेपर में अपीयर होना है. बिकॉज यू सी यू शुड बी able to find out which is the easiest way to pass the exam. ऐसा नहीं है कि एक ही रास्ता है एग्जाम पास करने का या कोई सब्जेक्ट को पढ़ने का. सो फॉर दैट यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज राइट. पहली प्रायोरिटी है द रिटन एग्जाम शुड बी क्लियर. सेकंड प्रायोरिटी है द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर इन योर माइंड, बिकॉज कल को आप शिप पे जाके इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करने वाले हो. ओके, सो इनको वी विल डिस्कस के थ्योरी सब्जेक्ट्स में भी कैसे हमने एग्जाम्स के बारे में तैयारी करनी है. सो डोंट वरी, वंस वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मॉड्यूल वी विल डिस्कस इट. ओके, थैंक यू सर. सर एक ही एडवांटेज है, 1-2 एडवांटेज है ऑनलाइन क्लासेस का. सर हम जो पास्ट, अगर हम किसी दिन एब्सेंट होते हैं तो पास्ट वीडियो देख के हम लोग डाउनलोड करके फिर सर देख सकते हैं कि क्या क्या पढ़ाया है. और दूसरा सर घर बैठे सर घर बैठे पढ़ाई हो जाती है सर. बेटा इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती, बिकॉज यू सी एज सी फेरर व्हाट थिंग वी आर मिसिंग आउट इज फैमिली टाइम. So this is a golden opportunity where you can stay with your family, you can have that family time, and you can do your courses also along. That's the greatest plus point. I fully agree with you. Okay, ठीक है बेटा. So your points are noted. So let's continue. Vandana ma'am, have you taken the feedback? Yes sir. Okay, all right ma'am, all right. ठीक है जी. Okay, so ठीक है बेटा. Let's continue. Let me open up the presentation. Okay, so बेटा पहले आते हैं कॉन्सेप्ट पे. What is this concept of raising, dipping और first last sighting of a light? दो तरीके से इस चीज को बताया जाता है. एक तो जो वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज रेजिंग और डिपिंग ऑफ ए लाइट. सेकंड जो टर्म हम यूज करते हैं दैट इज फर्स्ट साइटिंग और लास्ट साइटिंग ऑफ ए लाइट. ये बेसिकली बेटा एक मेथड है जिससे हमें एक पोजीशन सर्कल मिलता है. व्हाट इज ए पोजीशन सर्कल? पोजीशन सर्कल इज ए सर्कल ऑन द चार्ट on which the ship's actual position lies. मतलब इस टॉपिक से ये जो कॉन्सेप्ट है रेजिंग डिपिंग का या फर्स्ट लास्ट साइटिंग का, इससे हमें एक मेथड मिलेगा जिससे हम चार्ट पे एक सर्कल बना पाएंगे एंड आवर पोजीशन विल बी ऑन दैट सर्कल एट दैट टाइम.
अब ये सर्कल बनाएंगे कैसे? देखो बेटा, सर्कल बनाने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए. वन, वेयर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड सेकेंड, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. ये दोनों चीजें हमें इस मेथड से पता चल जाती हैं. नाउ लेट अस सी व्हाट दिस मेथड इज एंड हाउ डू वी फाइंड आउट दीज थिंग्स. अब बेटा, इन क्वेश्चंस में जो डाटा हमें दिया रहता है, दैट इज they will give us a light, the name as well as the latitude longitude is mentioned for identification. They will give us the height of eye of the observer. either ये height of eye आपको क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा. अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपके पेपर में टॉप पे जो नोट्स होंगे उन नोट्स में हाइट ऑफ आई लिखा होगा. हम उसी हाइट ऑफ आई को यूज करेंगे. और तीसरी चीज जो इस क्वेश्चन में दी जाती है, that is the prevailing meteorological visibility. ये चीजें हमें दी जाती हैं. What is the method which we use? Now when you look at the chart, the range of a light which is given on the chart is its nominal range. What is the nominal range? Nominal range is the distance in miles at which a lighthouse or a light will be visible to us if the meteorological visibility is 10 miles. Okay, so let me show you the chart. So you can see a light which is given here, and in this light you see the characteristics: flashing 5 seconds, 168 feet. This is the height of the light. Then 14 miles. This is the range which I am talking about. So this 14 miles is the distance at which this light will be visible if the meteorological visibility is 10 miles. Now, it is possible that actual visibility may be more than 10 or less than 10. If the actual visibility has deteriorated because of any reason, fog, haze, pollution, smog, anything, तो आपको ये लाइट सर ये मेट विजिबिलिटी सर ये जो मेटेरियोलॉजिकल विजिबिलिटी है ये एग्जैक्टली क्या है कि जहां तक हमें चीज दिख रही है वो है ओके बेटा. हाँ बेटा, मेट्रोलॉजिकल विजिबिलिटी की जो डेफिनेशन है ना, इट सेज ए ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट, इसकी एक स्टैंडर्ड साइज है, इतने साइज का ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट पेंटेड मैट ब्लैक हमें कितने डिस्टेंस से दिखाई देता है, दैट इज द मेट्रोलॉजिकल विजिबिलिटी एट ए पर्टिकुलर प्लेस. ओके, लिस्ट ऑफ लाइट्स में इसकी एग्जैक्ट डायमेंशन भी लिखी हुई है. ओके, सो how do we judge it? We usually judge it when we sight a ship which has just come into our visibility range. So we just check how far away that ship is on the radar, and that's how we take a judgment of the meteorological visibility practically. Okay. As far as सर उसमें तो काफी कुछ इन्वॉल्व हो जाता है ना सर, शिप की हाइट भी इन्वॉल्व हो जाती है. हाँ बेटा, सारी चीजें करेंगे इन्वॉल्व भी वन बाय वन. बट यू सी, ship's height has got nothing to do, object height and ship's height has got nothing to do with meteorological visibility. जी सर, that is exactly what I wanted to know, क्योंकि visibility तो चांद तक होती है. तो the idea is कि जो हमें जमीन पे दिख रही है तो वही जो black object उस हालात में कहाँ तक दिख रहा है हमें, तो that is met visibility. This is a Correct. good base. Yeah, that is the meteorological visibility at that particular place in that particular condition. अब बेटा, meteorological visibility is a dynamic phenomena. It can be greater than 10, it can be less than 10 also. चार्ट में हमने इसको स्टैंडर्डाइज किया है कि लाइट की जो भी रेंज हम देंगे, that is the range at which this lighthouse will be visible at 10 miles meteorological visibility. अब अगर हमारी विजिबिलिटी 10 माइल से कम है, डिटीरियोरेट हो गई है, तो हमें ये लाइट 14 माइल्स पे नहीं दिखाई देगी, ये कम डिस्टेंस पे दिखाई देगी. इट कुड बी एट 10 माइल्स, 8 माइल्स, 5 माइल्स, 2 माइल्स. दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ डिटीरियोरेटेड द विजिबिलिटी इज. और अगर हमारी विजिबिलिटी 10 माइल्स से ज्यादा अच्छी है तो हमें ये लाइट 14 माइल से भी ज्यादा डिस्टेंस पे दिख सकती है. We may be able to see this light at 15 miles or 20 miles, even 25 miles. So that is meteorological visibility. सारे फैक्टर वन बाय वन बेटा कंसिडर करते चले जाएंगे. तो इस टॉपिक को, रेजिंग डिपिंग या फर्स्ट लास्ट साइटिंग को
पोजीशन सर्कल बनाने में जो पहला स्टेप हम फॉलो करते हैं, दैट इज वी कैलकुलेट द प्रेजेंट ल्यूमिनस रेंज. इन शॉर्ट इट इज नोन एज PLR. समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज ओनली LR, प्रेजेंट ल्यूमिनस रेंज और ल्यूमिनस रेंज. इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं. इसका मतलब सर क्या है? एक क्वेश्चन है सर. बोलो बेटा. सर ये नॉमिनल रेंज वाले में जो आपने बताया कि अगर विजिबिलिटी ठीक है तो मिनिमम 10 माइल्स तो दिखेगा ही ना वो 10 माइल्स पे. नहीं बेटा, अगर विजिबिलिटी हमारी मेट्रोलॉजिकल विजिबिलिटी 10 माइल्स है तो ओके ये ऑब्जेक्ट जो भी रेंज यहाँ पे मेंशन्ड है उस रेंज पे दिखाई देगा. ओके सर. और ये जो रेंज मेंशन है दैट इज नोन एज नॉमिनल रेंज. Yes, this range which is applicable to the met visibility of 10 miles is known as the nominal range of a light. ओके सर. Okay. तो हमें बेटा सबसे पहले तो नॉमिनल रेंज से प्रेजेंट ल्यूमिनस रेंज कैलकुलेट करनी है. मींस जो भी विजिबिलिटी हमारी है ग्रेटर देन 10 और लेस देन 10, उस विजिबिलिटी में ये लाइट हमें कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगी. ये हम कैसे करते हैं? This we do using a luminous range diagram. This diagram is provided to us in the Chartwrok paper. तो इस पेपर में ये डेविएशन कार्ड के साथ हमें ये ल्यूमिनस रेंज डायग्राम भी प्रोवाइड होती है. आई विल शो यू दिस डायग्राम जस्ट नाउ. एंड इस डायग्राम में हम एंटर करते हैं विद टू थिंग्स. वन इज द नॉमिनल रेंज ऑफ ए लाइट विच वी पिक अप फ्रॉम द चार्ट, and second is the meteorological visibility which is given to us in the question. So इन्हीं दोनों चीजों के साथ हम लोग इस डायग्राम में एंटर करते हैं. Let's see this diagram now. This is the luminous range diagram. So you can see इस luminous range diagram में दो हमारे coordinates हैं. One is the nominal range in miles. This is the nominal range of the light. And on the other axis, you have the luminous range in C miles in the prevailing visibility. So this side shows you the visibility. Okay, now to give you an example, this side gives you the luminous range in the prevailing visibility. So इस साइड से जो चीज हम लोग रीड आउट करेंगे ये हमारी luminous range होगी. अच्छा, इस डायग्राम में आप देखोगे देयर आर मेनी कर्व्स व्हिच आर गिवन. दीज कर्व्स रिलेट टू डिफरेंट विजिबिलिटी कंडीशंस. दिस इज द कर्व फॉर परफेक्ट विजिबिलिटी, दिस इज फॉर 20 माइल्स, दिस इज फॉर 10 माइल्स, 5 माइल्स एंड सो ऑन. अब हम इस डायग्राम में एंटर कैसे करते हैं? बोलो बेटा. सर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ग्राफ में सर 6 और 20. सर ये क्या है सर? अभी बताता हूँ बेटा. लेट अस से हमने चार्ट पे एक लाइट को देखा. उस लाइट की जो नॉमिनल रेंज है वो 20 माइल्स है. ओके, सो वी एंटर इनटू दिस लुमिनस रेंज डायग्राम विद दिस 20 हियर. इस 20 के साथ हमने एंटर किया एंड वी गो डाउन. हमने कहाँ तक जाना है? उस कर्व तक जाना है विच रिप्रेजेंट्स आवर प्रेजेंट मेट्रोलॉजिकल विजिबिलिटी. नाउ लेट्स अज्यूम हमारी मेट विजिबिलिटी 20 माइल्स है. Okay, 20 miles is our met visibility which is given in the question. So we come down from here, touch this 20 miles curve और इसी कर्व पे अब हमें हॉरिजॉन्टल लाइन में देखना है कि ये कर्व हमें ल्यूमिनस रेंज कितनी बता रहा है. So you see the luminous range which the curve is telling us is 32 nautical miles. So इसका मीनिंग क्या हुआ? एक लाइट हाउस जिसकी नॉमिनल रेंज चार्ट पे 20 माइल्स गिवन है, उस लाइट हाउस को हमने देखा 20 माइल्स विजिबिलिटी में. मेट्रोलॉजिकल विजिबिलिटी इज 20 माइल्स. एट 20 माइल्स मेट विजिबिलिटी वो लाइट हाउस हमें 32 माइल्स की रेंज पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा. तो 32 मिनिमम होगा या मैक्सिमम? इससे भी ऊपर जा सकता है? नहीं बेटा, 32 is exact. 32 is the maximum range at which the light will be visible to us. More than 32, not visible. Okay. Okay. अब बेटा let us assume
कि हमारी जो विजिबिलिटी है ये डिटीरियोरेट कर गई। सो सडनली यू हैड ए फॉग सेटिंग इन, और जो हमारी विजिबिलिटी है ये 20 माइल से ड्रॉप करके 2 माइल्स पे आ गई है। सो हाउ फार दैट लाइट हाउस विल बी विजिबल टू अस नाउ? तो हमने एंटर किया विद द सेम नॉमिनल रेंज, 20 माइल्स रेंज। इस नॉमिनल रेंज पे हम वर्टिकली नीचे आए। अब हमने कहाँ तक आना है? 2 माइल्स के कर्व तक आना है। Now, as you touch the 2 mile curve, you go horizontal and you see what is the luminous range this diagram is showing us. It is 6 miles now. So 20 miles nominal range वाला lighthouse अब हमें सिर्फ 6 miles के distance तक ही दिखाई देगा। More than 6 miles, the lighthouse will not be visible, क्योंकि हमारी visibility deteriorate होके 2 mile हो गई है। Okay, beta, this is understood. Any doubt coming to the mind? Okay, अब आप एक और चीज नोट करो इस डायग्राम में। I told you that the nominal range of a lighthouse is the range at 10 miles visibility. That is the definition of the nominal range. So let's check it from this diagram. Let us say कि ये लाइट हाउस की विजिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, ल्यूमिनस रेंज हम चेक कर रहे हैं लाइट हाउस की प्रेजेंट ल्यूमिनस रेंज, और विजिबिलिटी हमने ले ली 10 माइल्स। So 10 miles is this curve. Okay, so if you come down and you touch the 10 mile curve, okay, and you go horizontal, what is the luminous range which you are getting? 20, sir. So that means it is the same. Okay, 10 miles के कर्व पे आप कहीं भी इस डायग्राम को चेक करोगे तो जितनी आपकी नॉमिनल रेंज है उतनी ही ल्यूमिनस रेंज आपको दिखाई देगी, क्योंकि जो हमारी नॉमिनल रेंज है उसकी डेफिनेशन ही ये है that at 10 miles visibility, what is the distance at which the light can be seen? What is the luminous range of the light? That is what nominal range is. So this is clear now, beta? Concept is clear? The nominal is on the chart and luminous is what we actually see. Beta, what we actually see is the luminous range. Okay, nominal range is what is given on the chart. सर विजिबिलिटी है तो इंटरपोलेट करेंगे 10 और 5 के बीच में। राइट बेटा, अब यहाँ पे तो इन्होंने हमें कुछ एक स्टैंडर्ड वैल्यूज ही दी हैं विजिबिलिटी की, कि फ्रॉम 10 माइल्स द नेक्स्ट कर्व इज 20 माइल्स। तो अगर ये 15 माइल्स हो जाता है देन यू हैव टू अप्रोक्सीमेट अ लिटिल बिट, यू विल हैव टू मेक ए कर्व exactly in the middle. Now you don't have any tools to draw it, it will be a freehand curve which you will be making. So then you will, let us say if the visibility is 15 miles, so try to make a curve exactly between रेजिंग डिपिंग से हम जो पोजीशन लेते हैं इस पोजीशन सर्कल से पर्टिकुलरली, तो उसमें एरर बहुत होगा। That will not be an exact. Yeah, what you are saying is right. अभी रेजिंग डिपिंग यूज नहीं कर रहा हूं मैं, ओके, रेजिंग डिपिंग बाद में यूज करेंगे। बट ये जो मेथड है बेटा, जो ये मेथड अभी हमने देखा, यूजिंग द ल्यूमिनस रेंज डायग्राम एंड फाइंडिंग द प्रेजेंट ल्यूमिनस रेंज ऑफ ए लाइट हाउस, ये मेथड बेटा कोई बहुत ज्यादा एक्यूरेट मेथड नहीं है। रीजन इसका क्या है? रीजन ये है बेटा, आपने लेट अस से यू वर वाचिंग ए शिप अपीयरिंग ऑन द होराइजन, आपने उस शिप को अपीयर होते देखा और आपने रडार पे उसका डिस्टेंस चेक किया, वहां से आपने विजिबिलिटी चेक की और ये विजिबिलिटी आपको मिली 20 माइल्स। अब आप इस डायग्राम में गए, आपको एक लाइट हाउस दिख रहा था, सडनली लाइट हाउस दिखना शुरू हुआ, तो आपको पता है कि ये लाइट हाउस की जो नॉमिनल रेंज है चार्ट पे लिखी हुई वो कितनी है, आपको विजिबिलिटी भी पता है, सो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द ल्यूमिनस रेंज ऑफ दिस लाइट हाउस। अब आपने ल्यूमिनस रेंज निकाल ली कि भाई लाइट हाउस की ल्यूमिनस रेंज 32 माइल्स है, बट इस 32 माइल्स में बहुत एरर हो सकती है। एरर इसलिए क्योंकि जो विजिबिलिटी है, नॉट नेसेसरली विजिबिलिटी इज द सेम इन ऑल द डायरेक्शन, नॉट नेसेसरी, especially when you are coasting, it is possible towards the coast the visibility may be less or more depending upon what is on the sea side.
तो ये जो मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये अप्रोक्सीमेट मेथड है, बट चार्टवर्क के क्वेश्चंस में इसको यूज किया जाता है। तो चार्टवर्क के क्वेश्चंस में इफ दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन वी कंसिडर इट एज ए पोजीशन सर्कल। ओके बेटा, गॉट इट? ओके। सर ये ग्राफ कहाँ से मिलेगा अदरवाइज एग्जाम के? बेटा ये एमएमडी में तो एमएमडी सर्वेयर आपको देंगे, और यहाँ पे ये मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। ओके, तो बेटा अब अगर आपको मैं कोई एक लाइट हाउस दूँ चार्ट पे और मैं आपको बता दूं कि भाई व्हाट इज द मेट्रोलॉजिकल विजिबिलिटी, तो आप उसकी ल्यूमिनस रेंज ढूंढ सकते हो? हाँ सर। जी सर। Yes, sir. So we know how to find the luminous range now. Let's come to the second concept. ये पहला स्टेप है। जब भी हमें ये रेजिंग डिपिंग का और फर्स्ट लास्ट साइटिंग का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, हम सबसे पहले लाइट हाउस की ल्यूमिनस रेंज को फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है कैलकुलेटिंग द जियोग्राफिकल रेंज। बेटा ये जियोग्राफिकल रेंज क्या चीज है? लेट्स सी। Geographical range is basically the greatest distance at which an object or a light source can be seen as limited by the curvature of the arc. What all factors on which it will depend? It will be dependent upon the height of the object or light and the height of eye of the observer. And there is a third factor also, which is basically the refraction of the atmosphere. Now, refraction of the atmosphere is more or less constant. This is not a variable factor. The variable factors are height of the object and height of eye of the observer. As you can see in this diagram, beta, let us say we have a observer here, and sorry, this is the light. This is the lighthouse. We have a observer on the ship, on the bridge here, and we have a lighthouse here. So you see, because of the curvature of the earth, this is the maximum distance at which the observer can see it. If the ship goes slightly away from this location, then you see the curvature of the earth is going to come in between. Okay, let me pick up black. So you see the curvature of the earth is going to interrupt this line of sight, and you will not be able to see the light any further. So this is the geographical range of the light. Okay, the greatest distance at which an object or a light source can be seen limited by the curvature of the earth, dependent upon height of eye of the object, height of eye of the observer, and the third factor is refraction of the atmosphere. So refraction of the atmosphere is taken as a constant. Two variables are there, height of the object and height of eye of the observer, which decide what will be the geographical range of a light. To explain it very simply, when you are on the bridge, you are able to see far away onto the horizon. But when you go on the main deck, your visibility is restricted. It is possible that on the bridge, some ship may be visible to you, but when you go on the main deck, that ship disappears because your height of eye has reduced now. That has reduced the geographical range. Okay, so now how to calculate this geographical range? For this, we have a very simple formula. The geographical range formula is geographical range of a light in nautical mile is given by 2.095 multiplied by under root h, capital H, plus under root small h. What is this capital H? Capital H is the height of the lighthouse. And what is the small h? It is the height of eye of the observer. So you can note down this formula, beta. So this formula will be used to calculate the geographical range of the light. You can take a screenshot of the slide
or you can note it down in your notebooks. ये 2.095 वो कांस्टेंट है ना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के लिए? Yeah, that's constant. Okay, so this is done, beta. Yes, sir. Okay. So beta, now we know how to calculate or find out the luminous range of the light from the luminous range diagram and how to find the geographical range of the light. अब जब भी हमें ये फर्स्ट लास्ट साइटिंग या रेजिंग डिपिंग की बात की जाती है क्वेश्चन में, हम ये दोनों रेंजेस को पहले तो फाइंड आउट करते हैं. वी फाइंड द PLR प्रेजेंट ल्यूमिनस रेंज, वी फाइंड द GR दैट इज द जियोग्राफिकल रेंज. ये दोनों को फाइंड आउट करने के बाद हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं. इन दोनों रेंजेस में से जो भी छोटी होगी दैट रेंज विल बी द फर्स्ट or last sighting of a light. Okay, or if it is given as raising dipping, that will be the range at which a lighthouse raises or dips. First last sighting का मतलब है बेटा, आप एक कोर्स पे चल रहे थे, you are expecting a lighthouse to be visible on the horizon. What is that moment when the light is first sighted by you? So that is known as first sighting. And when you are going away from a lighthouse, what is the distance at which the light is going to disappear? That is known as the last sighting of the light. Raising dipping is also used loosely for the same principle. But जो literal meaning है raising dipping का, वो होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको जियोग्राफिकल रेंज पे दिखाई दे. Visibility is perfectly clear. There is no restriction of the present luminous range. The light is powerful enough. But the light is visible to you when it appears at its geographical range. That is known as raising and dipping. लेकिन जो चार्टवर्क के क्वेश्चंस हमें आते हैं उनमें जरूरी नहीं है कि रेजिंग डिपिंग को सिर्फ ये जियोग्राफिकल रेंज के साथ ही यूज करें. They can use it with the PLR also. इन टर्म्स को लूजली दोनों कॉन्सेप्ट के साथ यूज कर लिया जाता है. But literal meaning of raising dipping is with the geographical range of the light. So हमने दोनों को कंपेयर करना है PLR and GR. If PLR is greater than geographical range, मतलब हमारी luminous range तो बहुत है, but geographical range कम है. So in that case, the distance of first or last sighting will obviously be equal to geographical range. The light, because of its luminosity, may be visible at a distance of 40 miles also. But if the geographical range is only 30 miles, तो आपको वो 30 miles के बाद बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, because the curvature of the earth is going to cut it down. So this is also known as raising dipping distance of a light. अब कई बार इन क्वेश्चंस में ऐसा होता है, ये आपको फर्स्ट और लास्ट साइटिंग टर्म तो क्वेश्चन में बता देते हैं, but they do not give you the meteorological visibility in the question. कई बार ऐसा होता है. 90% of the question met visibility will be given to you, but if it happens कि उन्होंने आपको फर्स्ट लास्ट साइटिंग का कॉन्सेप्ट तो दे दिया but met visibility नहीं दी, तो in that case you use a met visibility of 10 miles or you use the nominal range as the present luminous range. ओके, सो नॉमिनल रेंज को ही आप अपनी PLR रेंज एक्सेप्ट कर लेते हो. उस केस में आप वहां एक रिमार्क लिखोगे, सिंस द विजिबिलिटी इज नॉट मेंशन्ड, कंसीडरिंग द विजिबिलिटी टू बी 10 miles, दैट इज द स्टैंडर्ड विजिबिलिटी व्हिच वी हैव. सो अप टू हियर ओके बेटा? सर प्रैक्टिकली के लिए तो अपना राइजिंग डिपिंग के लिए GR यूज करते हैं, बट फॉर द ओनली पर्पस ऑफ क्वेश्चन पेपर ये हमें LR और GR में जो ग्रेटर है उसको लेंगे, जो स्मॉलर है. सॉरी, राइट बेटा, राइट.
दैट्स राइट। ओके, सो अब हमने एक कंडीशन देख ली, व्हेन PLR इज ग्रेटर देन GR। नाउ लेट्स सी द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज PLR is less than the geographical range. लाइट की एक बार लास्ट स्लाइड एक बार चला गया। ओके, लास्ट स्लाइड बस एक सेकंड सर, इसका क्या मतलब है? द रेंज इज लिमिटेड बाय द स्मॉलर ऑफ द टू, मतलब अगर PLR कम है तो विल टेक PLR, GR कम है तो विल टेक GR। एग्जैक्टली बेटा, ओके सर, ठीक है। देखो इस केस में GR कम थी, हमने यहाँ पे GR को पिक किया है। अगले केस में आप देखो, दिस इज द नेक्स्ट केस, इसमें PLR कम है तो हम लोग PLR को ही अपना डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट और लास्ट साइटिंग ऑब्जर्व करेंगे। सो आवर फर्स्ट लास्ट साइटिंग विल बी एट द प्रेजेंट ल्यूमिनस रेंज। So similarly here also, if visibility is given in the question, then you can easily calculate the PLR. But अगर किसी क्वेश्चन में उन्होंने आपको visibility नहीं दी है, then you can use the nominal range or you can use a 10 miles standard visibility for that question. Okay, now once you have decided whether the first last sighting range is the PLR or the GR, you take your compass and you can draw a position circle centered at the light and using the appropriate distance. अगर PLR कम है तो आप PLR रेडियस लेके अपना पोजीशन सर्कल बना दोगे। अगर जियोग्राफिकल रेंज कम है तो आप GR के इक्वल अपना रेडियस लेके सर्कल को लाइट पे बना दोगे। ओके, सो लेट मी शो यू द टू कंडीशन बेटा। ये जो कंडीशन देख रहे हो आप, इसमें देखो PLR तो 30 माइल्स है, ओके, बट ये जो लाइट हाउस की हाइट है और हाइट ऑफ ऑब्जर्वर है, इसके बेसिस पे जो जियोग्राफिकल रेंज है दैट इज ओनली 10 माइल्स, सॉरी 20 माइल्स। सो आउट ऑफ दीज टू GR इज स्मॉलर, सो दिस लाइट विल बी विजिबल व्हेन द शिप रीचेज एट द GR। ओके, जो ये दूसरा शिप है ये 25 माइल्स पे है, इट इज विद इन द PLR बट स्टिल द लाइट इज नॉट विजिबल क्योंकि इसकी जियोग्राफिकल रेंज कम है। सो दिस इज द कंडीशन व्हेन जियोग्राफिकल रेंज इज लेस देन द PLR। सेकंड कंडीशन, व्हेन द PLR इज लेस देन द जियोग्राफिकल रेंज। तो यू सी, ये जो लाइट हाउस है इसकी जियोग्राफिकल रेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन। अब ये जो शिप है ये जियोग्राफिकल रेंज में तो एंटर कर गया है बट इज स्टिल नॉट एबल टू सी द लाइट बिकॉज द PLR इज लिमिटेड। द PLR इज ओनली दिस मच, सो शिप विल बी एबल टू सी द लाइट ओनली व्हेन इट रीचेज एट द PLR रेंज। ओके, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर बेटा। यस सर। Okay, so that completes the basics of chart work and the concepts of geographical range, luminous range, and PLR, nominal range and PLR. So that's all what we had for today. So that's the end last slide खोलेंगे क्या? last slide और जिसमें PLR is less than GR वो थोड़ा लिख लेते हैं, फोटो ले लेते हैं सर। Okay, beta, all right. This one. इससे पिछली वाली सर, इससे पिछली वाली। This one beta, the text. Yes sir, yes sir, yes sir. Okay, thank you sir. एक मिनट लास्ट वाली भी दिखा दो सर। Okay, the diagram beta or the previous one? सर दोनों डायग्राम सर, दोनों डायग्राम। Okay, this is diagram number 1. सर नेक्स्ट। Okay, let's go to the second diagram. This is diagram number 2 beta.
Okay, sir. Thank you. Okay, beta, that's all for today's session. So see you in tomorrow's session. सर Bye. सर बोलो. सर जस्ट एक मैं इसलिए एंड में पूछ रहा था, एक स्मॉल डाउट था मेरा, मकेटा प्रोजेक्शन से ही था, आंसर आ गया एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट वन स्मॉल डाउट। वो आपने जो उस दिन फंडा बताया था कि जब आप 180 डिग्रीज के बीच में ले रहे हैं तो ईस्ट वेस्ट साइड डायरेक्शन में आपने बताया था ईस्टर्ली जाएंगे तो ईस्ट साइड विल टेक ऑन द लेफ्ट साइड एंड द वेस्ट साइड ऑन द राइट साइड, राइट? तो यही केस 0 डिग्रीज में ले रहे हैं हम लोग। लाइक ये था कि मुझे मकेटा चार्ट बनाना था 3 डिग्रीज ईस्ट एंड 2 डिग्रीज वेस्ट के बीच में, तो अगर इसमें मैं लूंगा 0 डिग्रीज सेंटर में, तो अगर राइट साइड में जाता हूँ तो इंक्रीज ही हो रहा है, तो इसमें राइट साइड में फिर मैं ईस्टर्ली लूंगा ना? Exactly, beta. On the right side you will have east, on the left side you will have west. एंड 180 में इसका ऑपोजिट था। Yes, that's right. ये थैंक यू सर, थैंक यू। Okay. Okay, beta. See you then. You can log off. See you in tomorrow's class. Bye bye. सर क्वेश्चन नंबर 4 भी डिस्कस करना था, मर्केटर वाले जो आपने 4 क्वेश्चंस दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 मर्केटर सेलिंग का डिस्कस करना है, जो हमारी चार्ट एंड प्रोजेक्शन असाइनमेंट थी। यस सर। ओके, नो प्रॉब्लम। कल बेटा क्लास में ये पहले यही डिस्कस कर लेंगे, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके बेटा। Okay, beta. Bye bye then. We log off and we meet tomorrow. जी सर, थैंक यू। Thank you.